ऑफ नेक्स्ट कंटेंट। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा कल नॉवेल्स के बारे में, जो फेमस नॉवेल्स हैं, तो कुछ रिमेनिंग था वो कर लेते हैं और आज नॉवेल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं। तो एच.जी. वेल्स द टाइम मशीन कीप्स लॉग द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली। टाइम मशीन आपको करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टीना एल्बर्ट्स, तो ये 3 नॉवल एच.जी. वेल्स की आपको करनी है डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉन गाल्सवर्दी फॉरेस्ट सागा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है बेटा, टीजीटी में पूछी गई है, लेकिन ये किसी एग्जाम में। जोसेफ कॉनराड, टाइफून, लॉर्ड जेम, विक्ट्री, हार्ट ऑफ डार्कनेस। These are some important novels and you should just focus on these novels, asking the writer who author of this one. तो ये पूछ लिया जाता है बेटा कई बार। Next is Arnold Bennett, The Old Wives' Tale. That's an important one. Cliffhanger and Buried Alive. These three the important one. Arnold Bennett, George Murray, The Brook Kerith, Rudyard Kipling, The Jungle Book is very very important. So much important है ये बनाओ। पेंटम रिकोशेक्शा, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा इनकी। जॉर्ज गिजिंग, बॉर्न इन एग्जाइल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड न्यू ग्रब स्ट्रीट, नीदर वर्ल्ड, एमेंसिपेटेड। क्लियर? दीज आर सम इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर अस, जस्ट टेकन आउट। एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जहां जहां आपको टिक किया जा रहा है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्किंग इन द एग्जामिनेशन बेटा, दैट्स अ फिक्स फॉर यू। Next is William de Morgan, Joseph Vance, Alice Possot, Somehow Good, Orlando, this is Virginia Woolf, and it's a very very important point. And To the Lighthouse, these two are important. Virginia Woolf, James Joyce, Ulysses, much important, and create a contradiction with the Shakespeare's Ulysses. Yeah, and a portrait of the artist and young man, this one. This is the novel. E.M. Foster's A Passage to India, that's very, very important, better. The Hill of Davy, Longest Journey, these are the important. Home Human Bondage are given a Somerset Maugham, and Lady Frederick. D.H. Lawrence in The Sons and Lovers, much, much important, better. Sons and Lovers, Women in Love, and The Rainbow, White Peacock, these are the some points to understand in each one. चलिए, next thing is Aldous Huxley, Point Counterpoint, Brave New World, Mortal Coil, Antic Hate, इसका पढ़ना है। George Orwell 1984, and Hugh Walpole, Mr. Parry and Mr. Trail, Mr. Streets, this one. Clear? एक बार जल्दी से हिंट कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन सी है। Okay, the next thing is J.B. Priestley, The Good Companion, बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। Dangerous Corner, and Time and the Cambridge, Graham Greene, No Need, William Gerald Golding, Lord of Flies, The Inheritance. Now the questions comes up. These are the some sections to understand other novels. तो नॉवल का जो ये टेबल था बेटा, हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, ये आपको केवल एक टारगेट देगा कि ये नॉवेल्स इनकी है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं रिलेटेड टू कंसर्न फॉर दिस, है ना, उस पर आप फोकस करेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो नॉवेल्स के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस बेटा, तो पहला क्वेश्चन है नॉवल से रिलेटेड, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट प्रोज रोमांस इन इंग्लिश? इंग्लिश का सबसे अर्लीस्ट प्रोज रोमांस, ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट वेट बेटा।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू एटलांटिस? न्यू एटलांटिस का ऑथर कौन है? दैट्स वन. तो बैकन है, जॉन लिली है, थॉमस मूरे है एंड सिडनी है. क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. हु इज द ऑथर ऑफ न्यू एटलांटिस? न्यू एटलांटिस के ऑथर कौन है? उसका नाम है फ्रांसिस बैकन. फ्रांसिस बैकन ने न्यू एटलांटिस लिखा है. चलिए जी, नेक्स्ट वन. हु इज द ऑथर ऑफ यूफिस द एनाटॉमी ऑफ विट? बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. थॉमस नेसे, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, थॉमस लॉस. हु इज दैट? द आंसर इज जॉन लिली. क्लियर? नेक्स्ट वन. थॉमस मूरे गॉट द इंस्पायरेशन ऑफ राइटिंग हिज यूटोपिया फ्रॉम? यूटोपिया एक इंस्पायर्ड राइटिंग है. इंस्पायर्ड राइटिंग जो किसकी है? होमर्स ओडिसी से ली गई है, एरिस्टोटल पोएटिक्स से, या प्लेटोस के रिपब्लिक से, या वर्जिल के एनेड से, आइड से, किससे ली गई है बेटा? तो इनका आंसर है प्लेटोस रिपब्लिक. तो प्लेटो की रिपब्लिक से इंस्पायर्ड वर्क है यूटोपिया, रिटन बाय थॉमस मूरे. डन. नेक्स्ट इन, थॉमस मूरे's Utopia was first written in Latin in 1516. That's the greatest thing. In which year was it re-rendered into English? English में कब आई? Latin में आई थी. Latin से English में कब आई? 1520 में, 51 में, 1557 में, या 59 में? ये आपको बताना है कब ये रेंडर्ड की गई. The question is second बेटा, 1551. 1551. Understood? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. Who is the author of the Travels of Sir John Mandeville? The Travels of Sir John Mandeville, the complete work. इसके ऑथर कौन है? जॉन गोबर, जॉन मैंडेविल, थॉमस ऑक्लीव, या विलियम डनबर? बिल्कुल मैंडेविल, सर जॉन मैंडेविल ही इसके ऑथर है. नेक्स्ट इज, which play of Shakespeare was inspired by Thomas Law's Rosalind? William Shakespeare was inspired. Thomas Law's के Rosalind से कौन से वर्क पे इंस्पायर्ड हुए थे? तो 12th Night, Much Ado About Nothing, As You Like It, and Midsummer's Night. I think the third option, the seventh is बिल्कुल सही. As You Like It से ही इंस्पायर्ड हुए थे बेटा. वेरी गुड आंसर्स बेटा, बहुत अच्छे से आंसर्स कर रहे हैं आप लोग. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is John Bunyan's Grace Abounding? John Bunyan's की जो Grace Abounding है वो क्या है? रिलीजियस ट्रेटाइज है, प्रोज रोमांस है, ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी है, या कमेंट्री ऑन द बाइबल? Bunyan's Grace Abounding किसे कहते हैं? द आंसर इज सी, यानी इसका आंसर है बेटा द ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी. Bunyan's Great Abounding. जॉन बैनियंस की जो ऑटोबायोग्राफी है इस नाम से है, को ये भी पता होना चाहिए साथ साथ. नाइन्थ, जॉन बैनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. जॉन बैनियंस का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज को क्या कहा जाता है? ट्रैवलॉग है, एलेगरी है, पिकास्क है, लॉन्ग सरमन. क्या है बेटा? आंसर इज एलेगरी. एक एलेगरी है. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next thing is, what type of novels Daniel Defoe's Small Flinders? Small Flinders Daniel Defoe की जो novels है उसको क्या कहेंगे? ट्रैवलर कहेंगे, पिकास कहेंगे, गॉथिक कहेंगे, हिस्टोरिकल नॉवल कहेंगे? ये आपको बताना है. बट आंसर शुड बी पिकास नॉवल. पिकास ये मैं डिफाइन पहले ही कर चुका हूँ कि पिकास क्या होता है, ट्रैवलर क्या होता है. क्लियर? चलिए. What type of novel is Thomas Nash's The Unfortunate Traveler? बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ ऑफ जैक बिल्टन भी कहते हैं इसको. तो इसको क्या कहेंगे? रोमांस, एलेगरी, ट्रैवलॉग, पिकास्क? आंसर इज ट्रैवल. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज डेनियल डेफोज रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो डेनियल डेफो का जो है वो क्या है? ट्रैवलॉग है, पिकास्क है, हिस्टोरिकल है, एलेग्रिकल है, क्या है? ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 12.
आंसर शुड बी बेटा फर्स्ट और ट्रैवलर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट इज नॉट वन ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ one of the following novelists is not one of the four wheels of the van of English novel. Mark him out. कौन है आपको बताना है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में, तो ध्यान से देखिए क्या है। वॉल्टर स्कॉट। इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। वो कह रहे हैं वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट इज नॉट वन ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ द वैन। तो इन इंग्लिश नॉवल, तो इन द इंग्लिश नॉवल तो इनमें से नहीं है, बाकी सब हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू नो। In Joseph Andrews Fielding Paradise, Radcliffe's Romance of the Forest, Smallest Roderick Random, Richardson's Pamela, Stone's Tristram Shandy. The answer should be Richardson's Pamela. Who is the author of Castle of Otranto? ये बहुत बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके ऑथर कौन है? तो क्लारा रीव, एन रैडक्लिफ, हॉरेस वॉलपॉल एंड एम.जी. लेविस। आंसर इज थर्ड वन, हॉरेस वॉलपॉल। हॉरेस वॉलपॉल स्टार्टिंग द गॉथिक, ये भी आप याद रखिए। द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो इज The Mysteries of Udolpho is a Gothic novel because domestic historical. That should be the answer of the 16th question, beta. The first is Gothic. और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वॉलपोल जो है, वॉलपोल is the originator of Gothic novels. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। What is a Peacock's novel? A novel whose hero is knight, a novel whose hero is a villain, a novel whose hero is a wandering rogue, a novel whose hero is a subordinate to the heroine. Yes, beta. The answer is a novel whose hero is a wandering rogue. बदमाश कह सकते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय रिचर्डसन? रिचर्डसन के द्वारा कौन सी नॉवल इसमें से लिखी गई है? तो हैम्फ्री क्लिंकर, रॉडरिक रैंडम, क्लैरिसा हैर्लो या जोसेफ एंड्रयूज। द आंसर शुड बी थर्ड, क्लैरिसा हैर्लो। क्लैरिसा हैर्लो। चलिए बेटा नेक्स्ट इज फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज इज अ वर्क लिस्ट बेस्ड ऑन last Richardson's Pamela. Richardson's Pamela. Next is referring to one of his novels, Jonathan Swift said, "Good God, what a genius I had when I wrote that book." Which novel was he referring to? ये जो लाइन है बेटा, इसको आप ध्यान दीजिए। This line, what a genius when I wrote the book, ये कहाँ से, कौन सी नॉवल से ली गई है? सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, ठीक है। और जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है A Tale to the of the Top, Battle of the Books, Gulliver's Travel, Cadmus and Vanisha। किसको? आंसर है फर्स्ट, A Tale of the Top। In a letter to Pop, Swift wrote, "I heartily hate and detest that animal called man." This is the central theme of one of his novels. Which is it? Gulliver's Travel, Battle of the Books, Tale of the Top, Cadmus and Vanessa. The answer should be first, Gulliver's Travel। बिल्कुल सही बेटा, आगे बढ़ते हैं। Swift wrote in one of his work, a young healthy child, well nursed, is at a years old, a most delicious, nourishing and wholesome food, whether stewed, roasted, baked and boiled. Where does he make this observation? Modest proposal, journal to Stella, the Drapos letters and Gulliver's Travel. And answer is first, modest proposal। उन्होंने ये थिंकिंग है और उनको ये भी कह सकते हैं
Swift analyze himself in this work. Yes. Chaliye, next one. In how many volumes did Tristram Shandy appear? Tristram Shandy के volumes बताने, many volumes. How many volumes? 3 volumes, 5, 7, 9. तो एक ये factual question है जो आपको कई बार रटना ही पड़ता है, कोई और solution नहीं है. But answer should be last 9 volumes. That is. Next is, which work of Stern was left incomplete on account of his death? कौन सा वर्क स्टर्न का इनकम्प्लीट है ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेथ? Sermons, Sentimental Journey, Tristram Shandy, none of these. And that Tristram Shandy is an incomplete work. Who is the author of the Bride of Lammermoor? Bride of Lammermoor के author कौन है? Jane Austen, Maria Edgeworth, Wallace Scott, Thomas De Quincey. The answer should be Wallace Scott. It is the best thing of that in this work. This work is totally dedicated to his wife. Chaliye. Next is, who is the author of the Castle Rock Trent? Castle Rock Trent के author कौन है? Horace Walpole है, Mary Edgeworth है, Clara Reeve है या Anne Radcliffe है? आपको बताना है. तो Maria Edgeworth इनके author है. Identify the novelist whose novels are called Waverley novels. That is very, very important question, beta. Fielding, Walter Scott, Smollett, Jane Austen. तो वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल्स को वेवरली नॉवेल्स कहा जाता था. Who is considered to be the most important historical novelist of the Romantic period? Who is considered to be the most important historical novelist of the Romantic period? John Galt, John Aston, Jane Austen, Walter Scott, and Mary Edgeworth. Answer should be C, Walter Scott. Next one. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Which novel of Jane Austen opens with this sentence? Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, and Emma, I am Mansfield Park. First one. Pride and Prejudice. Which of the following novels is called a novel without a hero? Novel without a hero. Mill on the Floss, Northanger Abbey, Vanity Fair, Pickwick Papers. That answer should be third, Vanity Fair. Which of the following novel is not written by Jane Austen? इनमें से कौन सी नहीं लिखी है? तो Persuasion या Nightmare Abbey से एक होनी चाहिए बेटा. The answer is last, Nightmare Abbey. This one, very good. These all are written by. Which of the following novels is not written by Walter Scott? Walter Scott, The Heart of Middleton, Guy Mannering, Castle Rackrent, The Black Dwarf. तो आंसर है बेटा थर्ड, Castle Rackrent नहीं लिखी उन्होंने. What is Wessex? बहुत important question है. The hometown of Thomas Hardy, the reign in which Hardy's novels are set, the region which was largely inhabited by farmers in Hardy's time, a region on the border of England and Scotland. The answer is second. The reign in which Hardy's novels are set, to have Essex. George Eliot's novel Romola is a. That answer should be first, historical novel. Historical novel Romola को बोला गया है बेटा. That is very, very interesting novel बेटा.
आप आराम से इस चीज को समझ सकते हैं कि ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज इलियट्स वाज द पेन नेम ऑफ क्लारा क्रीव, मैरी एन एवंस, मैरी कॉलिंस, लारा एवंस। तो क्या आंसर होना चाहिए? आंसर है मैरी एन एवंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। So this content of our given two things and two important and filled 35. Then the next is Charles Dickens left one novel unfinished. So this Edwin Drood, Our Merciful Friend, Dombey and Son, and Little Torrid. I think first and what is this? बिल्कुल सही, एडविन ड्रूड इनकी अनफिनिश्ड थी, कल भी डिस्कस हुई थी ये बेटा, ठीक है। In which of Hardy's novel the scene of a wife's auction takes place? Wife auction के scene को takes place में किस में किया गया? Jude and Obscure, The Woodlanders, Tess, The Mayor of Casterbridge. किस में बेटा? 37. The answer should be last, The Mayor of Casterbridge. Very good. So these are some sections you can understand well what's actually going on in the life of this actual condition. Clear beta? So focus on this, that is very important. Next question beta. In one of his novels, Hardy says, happiness is but an occasional episode in the general drama of pain. In which of the following novels? Jude the Obscure, Tess, The Mayor of Casterbridge, The Return of the Night. The question is in front of you, beta. Just picking. The Mayor of Casterbridge. Question को दोबारा देख लीजिए. The Mayor of Casterbridge. Next is. In one of his novels, Hardy quotes Shakespeare's remark of as flies to the wanton boys are we to the gods. They kill us for the support. In which of the following novel does he quote these lines? Tess, Mayor of Casterbridge, Return of the Native, Jude the Obscure. 39. First, Tess. Next one, Hardy believed in the philosophy of immanent will, characters his destiny, free will, man as the architect of his own fate. First one, immanent will. Next is, what award was given to Hardy as a great novelist? यस बेटा, कौन सा अवार्ड दिया गया था उनको एक नॉवलिस्ट की तरह? तो नोबेल प्राइज, ड्यूरेटशिप, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नाइटहुड। ऑर्डर ऑफ मेरिट, वेरी गुड। Wilkie Collins as a novelist is best known for psychological characterization, creating double plots, the creation of sensational plots, the striking ending of his novels. Which should be, I think, third. Yes, better. The creation of sensational plots. Sensational plots काफी ज़्यादा Wilkie Collins लगाते थे. The phrase stormy sisterhood is applied to Charlotte Bronte, Emily Bronte, Anne Bronte, collective to all the three. I think D option होना चाहिए, क्योंकि सारे ही थे ये. बिल्कुल सही, stormy sisterhood कहा गया था इनको. Which of the following novels of Charles Dickens is most autobiographical? Tale of Two Tubs, David Copperfield. That is autobiographical, beta. David Copperfield, Charles Dickens. चलिए आगे बढ़ते हैं. Who is the author of novel No Name? Mrs. Elizabeth Gaskell, Wilkie Collins, Anne Bronte, Charles Kingsley. Wilkie Collins. Done.
Dickens said about one of his novels, I like this the best. Which novel was he referring to? अरे अपने ही डेविड कॉपरफील्ड अपने ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल में उन्होंने बोला था ये. Who is the author? नहीं author. Who is the author of Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Charles Teddy, Charles Kingsley, R.L. Stevenson, George Meredith. कौन है? 47. Yes, बेटा. R.L. Stevenson. R.L. Stevenson. Charles Dickens' characters are generally flat, round, humorous, flat. In Dickens' A Tale of Two Cities, the two cities refers to it's very simple, London and Paris. कल तो डिस्कस हुआ था. James Joyce Ulysses is based on the pattern of Homer's Odyssey, Tennyson, Ulysses, Virgil, and Vanessa's Pilgrim Progress. The answer should be first is Homer's Odyssey. So these are the some questions whatever we have discussed today regarding to the novels बेटा. तो ये एक सेशन था. अभी एक और थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करेंगे. एक राइटर को आज डिस्कस करने वाले हैं जैसे कल डिकन्स किया था. ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे. चलिए, राइटर शुड बी आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मैथ्यू आर्नल्ड को. मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में काफी कुछ जानते भी हैं आप लोग और कॉन्सेप्चुअल चीजें भी रही हैं. सेशन फॉर दिस मैंने आपको डिस्कस किया था. एक राइटर को डिस्कस करेंगे आज, तो वो है बेटा मैथ्यू आर्नल्ड. मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ कंटेंट्स को आज डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे बेटा. Matthew Arnold started his career. Matthew Arnold started his career as inspector of schools. इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, यानी स्कूल्स के अंदर इंस्पेक्शंस करते थे बेटा. ये सबसे पहले एज ए इनका जो करियर स्टार्ट हुआ था वो इस तरीके से हुआ था. सेकंड पॉइंट, he rose to the position of chairmanship of Poetry Act. He rose to the position of chairmanship in Poetry
group, in poetry group, Oxford University. Oxford University. Clear? This is the very important content for him, Matthew Arnold. Next point देखेंगे बेटा. Arnold won a prize at Rabi School for his pen. Arnold won a prize at Rabi School for his poem. At Rabi School for his poem Alaric at Rome. Alaric at Rome. Here, the next point is, according to Arnold, the next to Shakespeare and Milton, according to Arnold, the next to Shakespeare and Milton is Wordsworth. Genius in poetry. Genius in poetry or writing in literature. Writing in literature. Next point is, poetry is a criticism. Next point is, we understand about that. We can discuss on that. Yeah, we can say, next point, poetry is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. These lines said by Arnold in his work Essay on the Study of Poetry. Essay on the Study of Poetry. Clear, beta? The next thing is, truth sits upon
sits upon the lips of dying man. बिल्कुल सही, मरते हुए व्यक्ति के लिप्स पर सच्चाई होती है, ये बोला था आनंद ने. इन द वर्क सौरभ एंड रोस्तम. Saurabh and Rustam. Next thing, Arnold, Culture and Anarchy deals with the subject of theology. Clear? Next points पे चलते हैं बेटा. The next thing is Matthew Arnold, Thyresis is an allergy on the death of इसको ध्यान रखिए बेटा, एलेथेरेसिस जो है एक एलर्जी है और किसकी डेथ पर लिखी गई है? A.H. Cough. Done? The next thing is the basic theme of Arnold's literature and dogma is the basic theme of Arnold's literature is theology and religion. Clear? Next thing is Philistines. The word Philistine, the word indicated in Culture and Anarchy, Arnold's work the English middle class. यानी अगर आप कहें, क्वेश्चन आता है बेटा कई बार कि फिलिस्टाइन जो उन्होंने वर्ड यूज किया है अपने कल्चर एंड एनार्की वर्क के अंदर, तो ये आर्नल्ड का इसका मीनिंग जो था वो था इंग्लिश मिडिल क्लास. क्लियर? इसका मीनिंग था बेटा. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. द स्टोरी ऑफ सौरभ एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम the story of Saurabh and Rustam is taken from
फिरदौसी, 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 फिरदौसी से ली गई है. The next thing is, next point about Arnold beta. Arnold calls a certain poet यस बेटा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था. आइए नेक्स्ट कंटेंट पे. तो Arnold called a certain poet a beautiful but intellectual angle. A beautiful but intellectual angle, beautiful intellectual angle beating in the void, his luminous wings in vain. This is the complete line for the complete poets. सभी poets के लिए आर्नल्ड का ये अपना एक क्राइटेरिया था जो वो सोचते थे बेटा. क्लियर. एंड आर्नल्ड के बारे में तो वो पोएट थे पीबी शेली. डन. चलिए द नेक्स्ट पॉइंट इज for Matthew Arnold, a poetry of revolt, against moral ideas is, for Matthew Arnold, a poetry of revolt against moral ideas is a poetry of revolt against life. ये इनका मीनिंग था बेटा आर्नल्ड का. These are the points. Next is okay, the next point are Arnold said about a poet. Arnold said about a poet. Arnold said about a poet, with him is born our
real poetry. Real poetry this statement is said for Chaucer by आनंद. आनंद के द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया है चौसर को. नेक्स्ट इज T.S. Eliot said for Arnold that propagandist of literature. Propaganda of literature. Clear beta? Chalo, next time. Arnold said for Wordsworth, his poetry is the reality. His poetry is the reality. His philosophy is the illusion. His philosophy is the illusion. Clear? Next point. H.W. Garrett said for Arnold he thinks too much of the uses of literature and too little of its pleasure. Too little of its pleasure. Done? Okay, the next thing is here. Arnold's Marope is a dramatic poem. And the straight traveler is a poem through dialogues. And the last is Arnold got Oxford Prize for the work
Cromwell. Done. So these are the some main points regarding to मैथ्यू आर्नल्ड बेटा, और मैथ्यू आर्नल्ड के रिगार्डिंग टर्म्स पे ये सारी कॉन्सेप्ट हुए थे, तो ये सारे पॉइंट्स आप लर्न कर लेंगे। अब मैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए कल हमने डिकन्स को पढ़ा था, आज हमने आर्नल्ड को पढ़ा है, तो डिकन्स और आर्नल्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 9 तक आपका हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में अब राइटर्स ही चलेंगे, तो आर्नल्ड्स और डिकन्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर टुडे।